Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number 7, the role of government and citizens. Today I will deliver its first lecture. हमने इसका already introduction complete कर लिया है. You can watch it. And today I will deliver its first lecture. So my dear students, let's start it with an activity. So quickly think and tell me what is similar between you and your class fellows. आपके और आपके class fellows के दरमियान में क्या चीज सेम है? Height, your age. All the students of the same age are in one class. ठीक है, यानी कि एक ही क्लास में होते हैं. So इस तरीके से एक जगह जहां पर सिमिलर तरह के लोग रहते हैं, उनका सिमिलर रिलीजन होता है, उनकी वैल्यूज सेम होती हैं, उनका कल्चर सेम होता है, लैंग्वेज सेम होती है, उनको एक जगह वो या एक होमलैंड जो है वो शेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड अ कम्युनिटी. सो इसी तरीके से कम्युनिटी में ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत तरीके से सिमिलर होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कम्युनिटी, तो इसीलिए मैंने आपको ये एक्टिविटी करवाई है. A group of people living in a common place with particular characteristics such as religion, culture, values, government or identity is known as a community. So एक ऐसे ग्रुप लोगों का जो कि बहुत सारी सिमिलर चीजों को शेयर करती है और वो एक कॉमन प्लेस पे रहते हैं, such people are called a community. जैसे कि पाकिस्तान एक कम्युनिटी है, हमारी सेम गवर्नमेंट है, हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारे कल्चर सेम है, हमारी कौमी ज़बान एक है. सो ओवरऑल वी कैन से कि हम एक कम्युनिटी हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, a community is a group of people which share common place, religion, culture, values, government and identity. So एक community के अंदर ये तमाम चीजें जो हैं वो सेम होती हैं, ये उसको शेयर करते हैं. Okay? So my dear students, now on page number 55, the student learning outcomes are given, and by the end of today's lecture, all the students will be able to define community and its importance. So my dear students, now let's move forward towards the Islamic perspective. So Allah says in Quran, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. So my dear students, अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है वो मर्द और औरत यानी कि जोड़े से पैदा किया है और इसके बाद हमें कबीलों की सूरत में या कम्युनिटी की सूरत में जो है वो रखा गया है, या हमें इस तरीके से हिदायत दी गई है कि हम एक कम्युनिटी में रहें. कम्युनिटी में रहने के बहुत से फ़ायदे हैं. इंसान कभी भी अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक बहुत मशहूर कहावत है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी कि आप ज़्यादा लोगों के दरमियान रह सकते हैं, अकेले नहीं रह सकते. नोबडी कैन लिव अलोन, क्योंकि हमारी बहुत सी नीड्स ऐसी होती हैं जो कि हम शेयर करते हैं. आपको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, फॉर फूड पर्पस, फॉर मेडिकल पर्पस, और इसके अलावा बहुत सी और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें एक कम्युनिटी में रहना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने भी हमें यही कहा है कि हमें जो है वो कबाइल की सूरत में रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख पाएँ, एक दूसरे की मदद कर पाएँ, और अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है हर शय का. So my dear students, now let's move forward towards the pre-reading question. Quickly tell me, how do you behave with your neighbors? पिछली क्लासेस में हमने नेबरहुड के बारे में पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि हमें अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए. हमने ये भी पढ़ा है कि आपके नेबरहुड में बहुत सी डिफरेंट जो है वो प्लेसेस होती हैं. सो आप अपने नेबर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं? क्विकली टेल मी. वी मस्ट बिहेव वेरी नाइसली एंड रिस्पेक्टफुली. Now tell me, name some of the places in your neighborhood. There must be a park, school, hospital, shops. So these are different places in a neighborhood. Even a mosque. So these are different places in a neighborhood. So my dear students, now I request you all to please open page number 56 in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Community. Put your fingers where I will read. A group of people living in a common place with particular characteristics such as religion, culture, values, government, or identity is known as community.
It is not only benefits an individual, but the whole community. A person cannot grow alone. He needs people to support him, and community gives him that support. Furthermore, people also work in groups for the welfare of their community. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कम्युनिटी में रहने के बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं. आप अकेले कभी भी जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. सो तरक्की के साथ और सक्सेसफुली रहने के लिए हमें एक कम्युनिटी के अंदर मूव करना पड़ता है. और एक कम्युनिटी के अंदर रहते हुए आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करते हैं. इसके अलावा आप लोग ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं ताकि आप अपनी कम्युनिटी को बेहतर बना सकें. So my dear students, एक community को बेहतर बनाने के लिए we perform different activities. So now let's read about that. They perform the following activities. Keep their community clean. People plant more and more trees. Respect elders and senior citizens. Place dustbins, water coolers in community. Fulfill the needs of the poor and needy. They understand that such people are also a part of our community. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए आप एक दूसरे की मदद करते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को साफ रखते हैं. इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाते हैं ताकि हवा साफ रहे, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, वाटर कूलर्स प्लेस करते हैं, डस्टबिन प्लेस करते हैं ताकि इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रहे. इसके अलावा जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद की जाती है क्योंकि वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है. So my dear students, now let's move forward towards the practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, on one side you can see the pictures and on the other side you can see different activities that are performed by the people of a community. So you have to match the correct activity with the correct picture. So this is really easy. अभी आपने पढ़ा है, सिर्फ इनको आपने pictures से match करना है. Pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has finished it. Now let's move forward. So now let's move forward towards the evaluation. So quickly listen to the question and then orally answer them. Do you live alone or in a community? Of course, we live in a community. Now, what is a community? A group of people which live in a particular place, which share common religion, values, cultures, and government and identity is known as a community. So my dear students, now let's move forward towards the homework. For homework, you will do question number 1 from writing practice given on page number 65 in your notebooks. How does a community formed? एक community कैसे बनती है? When a group of people who have same government, who share same religion, who share same identity, so they form a community. Okay, my dear students, a community is formed when people living in a common place share particular characteristics such as religion, culture, values, government, or identity. They form a community. So, my dear students, you will do it in your notebooks. Now, let's move forward towards the next homework, which is home activity number 1. You are also a part of community. What are your duties as a member of the community? Among your duties, how many do you fulfill? Draw a table of your analysis on your notebook. So my dear students, आपकी बहुत सारी activities के बारे में आपने पढ़ा which makes the community better place. So आप इन activities में से कौन-कौन सी activities जो हैं ये fulfill करते हैं या इसके अलावा कौन-कौन सी activities जो हैं वो आप adopt करते हैं या आप fulfill करते हैं. So you have to make a table like this in your notebooks. You will write the duties on one side and if you perform then you have to place a tick like this. Okay. So complete it in your notebooks. This is your homework. Okay, my dear students, now it's time for wrap up. Today we have learned that when large number of people having similar characteristics and are living together, they form a community. Being part of a community, every citizen should work for its betterment. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.